नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम HCFI। मैं आपका दोस्त और आज के इस 103rd सेशन का होस्ट कृष्ण चावला आप सभी देखने सुनने वालों का, HCFI के मेंबर्स का, RWAs के मेंबर्स का, मार्केट एसोसिएशन, टेक्सटाइल एसोसिएशन और मेरी हेल्थ एजुकेटर फैमिली के मेंबर्स का आज के इस नॉन स्टॉप सेशन 103rd में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज हम मुख्य विषय पर चर्चा करें, बैक पेन एंड स्लिप डिस्क, उससे पहले मैं अपने डॉक्टर के कालरा से अनुरोध करूंगा कि वो कोविड अपडेट पर कुछ चर्चा करें। ओवर टू यू डॉक्टर के कालरा, और आपका यू वेलकम टू द सेशन। थैंक यू चावला जी और सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का इस नॉन स्टॉप 103 सेशन में आप सबका स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड के बारे में हमारे देश में पिछले एक महीने से, कुछ दिनों से नंबर हल्के धीरे से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। अब क्या स्थिति है, I would like to share the screen. ये स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी जी, दिखाई दे रही। हाँ, पहले पूरे वर्ल्ड का देखें तो ये 24 अप्रैल तक का WHO का डेटा है। तो उस हफ्ते में कंपेयर टू प्रायर वीक, इससे पिछले हफ्ते से देखें तो इस हफ्ते लगभग ग्लोबली जो है 21% न्यू केसेस में और 20% डेथ्स में कमी आई है। पर इसमें से देखें अफ्रीका रीजन और अमेरिकाज रीजन में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। अफ्रीका रीजन में 32% न्यू केसेस जो है एवरेज इस हफ्ते की कंपेयर टू प्रायर वीक, वो बढ़ोतरी हुई है। और बाकी सब रीजन्स में डिक्रीज ही हुआ है। अब हमारे देश में देखें, आज की लास्ट 24 आवर्स में 3205 केस लास्ट 24 आवर्स में ये रिपोर्ट हुए हैं और 31 डेथ्स। डेथ रेट 1.22% और रिकवरी रेट 98.74%। टोटल वैक्सीनेशन जो अब तक बच्चों में जो कि एलिजिबल है एज पर गाइडलाइंस मिला के लगभग 189 करोड़ प्लस 48 जो है लैक्स इतनी डोजेस लोगों को लग चुकी हैं। अब 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों का पहले ही शुरू हो चुका है। अब उसके नीचे का भी रिकमेंडेशंस तो हो चुकी हैं। अब गाइडलाइंस बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट वाली आ जाएंगी, तो उन छोटे बच्चों को भी जो है बिलो 12 इयर्स में भी ये शुरू जल्दी हमारे देश में शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड में पूरे देखें, जैसे पहले बताया, इस हफ्ते हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख ही रहे हैं ओवरऑल, एक्सेप्ट फ्यू रीजनल इंक्रीज। इंडिया में पिछले देखिए आप, ये कुछ दिनों से जो है हम हल्का सा स्लाइट इंक्रीजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ट्रेंड है ये। पर जो है हमें सावधानियां जो है अभी जरूर लेनी है। ये हल्का सा भी इंक्रीजिंग ट्रेंड किसी भी टाइम में ये नेक्स्ट लहर में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, 27 अप्रैल से भी पहले से, लगभग 5 अप्रैल के बाद से ये इंक्रीज होना शुरू हुआ था और
पर डे अब तो लगातार थोड़े 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 धीमी गति से बढ़ ही रहे हैं। ये एक जरूर कॉशन है, अलर्ट साइन है हमें कि हमारे जो भी हमने सीखा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, खासकर मास्क का उपयोग घर से जब बाहर निकले, तो ये बहुत जरूरी है कि हम यहीं पर ही इसको रोक दें, इस लहर को आगे बढ़ने ना दें। जब तक हम सब लोग इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। ये हमारे अपने ही हाथ में है कि ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड को हम यहीं चेक करें, रोक दें या इसको आगे बढ़ने दें। तो ये इसलिए जरूरी है कि सब सिटीजन्स जो हैं केयरफुली जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, तो ध्यान रखें। और वैक्सीनेशन जो थोड़े से बचे हुए हैं अभी लोग, एलिजिबल लोग, वो अपना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं। बाकी कंट्रीज में देखें, इवन चाइना में भी पिछले दिनों से अपवर्ड ट्रेंड है, अभी भी ऊपर नीचे चल रहा है, देख रहे हैं हम। रशिया में अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, ये पिछले एक महीने का ट्रेंड दिखा रहा हूँ ग्राफ्स में मैं। और यूके में भी अब जो है डेफिनेटली जो है वी कैन सी ए डाउनवर्ड ट्रेंड, और अब जो है लगभग 12,000 के करीब एवरेज पर 7 डे एवरेज न्यू केसेस की है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में भी एकदम क्लियर कट डिक्लाइन नहीं, अभी भी जो आप देख सकते हैं हल्का सा फ्लैटनिंग है, या थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड है, पर केसेस सिर्फ अभी 61,000 के करीब 7 डे एवरेज है, क्योंकि पहले से डेफिनेटली यूके और यूएस में कमी आई है न्यू केसेस की, और अभी भी जो है वहां पर भी जो है खतरा बरकरार है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी अब जो पिछले दिनों में काफी 50 से ऊपर, 1000 से ऊपर केसेस आ रहे थे, अभी भी जो है 39,000 के करीब 7 डे एवरेज है। जर्मनी में भी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया, पर अभी भी जो है 84,000 7 डे एवरेज न्यू केसेस की पर डे की है। फ्रांस में 51,000 7 डे एवरेज। जापान में भी लगभग 33,718 की 7 डे एवरेज है। यहाँ पर भी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू है, और अभी भी केसेस काफी अधिक मात्रा में रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, पाकिस्तान और नेपाल, सभी जगह जो हम क्लियर कट जो है एक्सेप्ट नेपाल, बाकी तीनों देशों में हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। नेपाल में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस अभी हैं ऊपर नीचे, पर केसेस बहुत कम है, सिर्फ 11 केसेस 7 डे एवरेज है। साउथ अफ्रीका में आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जैसे इंडिया में कुछ दिनों से थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि केसेस थोड़े से धीरे से वहां पर भी बढ़ रहे हैं। और 7 डे एवरेज साउथ अफ्रीका की जो है 4,793 7 डे एवरेज है। थाईलैंड में भी 12,000 7 डे एवरेज न्यू केसेस की, तो ये 60 वहां भी कंट्रोल में है। तो अपने देश का देखें कि जैसा कि ग्राफ में दिखाया मैंने, दिल्ली में जो है आजकल जो है पूरे हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं रिपोर्ट, पर टोटल नंबर जो है वो 2000 से कम है। लास्ट 24 आवर्स में 1414 न्यू केस दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं। बाकी सब स्टेट्स में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, वहां पर भी जो है सिर्फ 182 केसेस लास्ट 24 आवर्स में और एक डेथ। केरला में भी 296 केसेस सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, और कर्नाटका में, तमिलनाडु, सभी स्टेट्स में स्थिति काफी जो है कंट्रोल में है। हरियाणा में 505।
तो दिल्ली में 1414 और नेबरिंग स्टेट्स में हरियाणा में 505। मिजोरम में भी अभी 44, छोटी सी स्टेट है ये, अभी भी जो है 44 केस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये था अबाउट कोविड का स्टेटस इंडिया एंड ग्लोब। ओवर टू चावला जी टू इनवाइट अंजलि जी। Thank you, Dr. Kalra, for the information about COVID. COVID is decreasing, but still we have to follow COVID protocol. We should not forget about it. दिल्ली में दोबारा से मास्क कंपलसरी हो गया है, ना पहनने पर जुर्माना भी है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और हमारा जो आज के सेशन का सेकंड पार्ट है उसका सब्जेक्ट है बैक पेन एंड स्लिप डिस्क। आप सभी को याद होगा कि हमने कुछ वीक पहले एक सेशन किया था फ्रोजन शोल्डर पर। तो उस समय बहुत से लोगों के सुझाव आए थे कि हम बैक पेन के ऊपर चर्चा करें। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर अंजलि अग्रवाल टू बी विद अस। As you all know, she is a licensed physiotherapist. Before coming to India, she got education in UK, and she's having a lot of experience, and she specializes in cardiac rehabilitation, pulmonary rehabilitation, women health, pelvic floor physiotherapy, and so on. Moreover, she is the senior member of our health educator family, and she is welcome to take this session today. On behalf of all health educators, I welcome Dr. Anjali to this session. Over to you, Dr. Anjali. You're muted. Please unmute yourself. Yes. Yeah. Thank you, Chawla ji. Thank you, Dr. Kalra. Thank you, CFI. Back on Wednesday again with another good topic of back pain and slip disc. हम सबके बैक और स्पाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हम पूरे दिन बैठे रहते हैं या जो भी काम करते हैं, हमारी स्पाइन अच्छी है तभी हम कर पाते हैं, और इसका ख्याल रखना हर समय हमें बहुत जरूरी है। और इसका ध्यान हम बचपन से बुढ़ापे तक रखना चाहिए, बिकॉज स्पाइन एक ही है और इसको बार बार हम मतलब मजबूती से ही आगे बढ़ सकते हैं स्पाइन से। I'll just share my PPT now. Please. Yes, we can see. Yeah. So we'll go up there. That's my introduction. Dr. Kalra ji ने already दे दिया है, and my contact details in case people have any queries, they can ask one-to-one also on my phone numbers. So I always advocate, सबसे फर्स्ट मंत्रा है फिजिकल लिटरेसी। फिजिकल लिटरेसी है जो भी हमारा बैक पेन है, आधे से ज्यादा समय हमारे sedentary lifestyle और being very sedentary on the chair, उस कारण से आता है। If we are very actively involved in our chores of the house, daily chores of going out and exercising, walking, doing everything on our toes, it will help to minimize the incidence of back pain, or will bring down the complications which are associated with slip disc and back pain. So physical literate होना बहुत जरूरी है। We are very educated, हम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, but physical literacy पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे ज्यादा बैक पेन को मैनेज करने में फिजिकल लिटरेसी बहुत हेल्प करती है। नाउ तो हम लोग हमेशा बोलते हैं मेरा डिस्क स्लिप हो गया है। जब भी पेन आता है बैक में, एक कॉमन क्वेश्चन सबको माइंड में रहता है कि मेरा बैक में डिस्क है वो शायद स्लिप हो गया है, बट आधे से ज्यादातर ये मिथ होती है। इनको हम बोलते हैं कि डिस्क डोंट स्लिप। आज के 21st सेंचुरी के बाद हम लोग ये बोला जाता है कि द डिस्क इज नॉट अ मटेरियल व्हिच कैन स्लिप, इट्स योर पोस्चर, आपका जो वर्टिब्रेज है, इसके कारण आपके डिस्क की ये हालत होती है। बट जो एक मिथ बना हुआ था कि मेरा डिस्क निकल आया है, हर्निएट हो गया है, भागो सर्जरी के लिए भागना है, वो जो मिथ है, वो जो डर बैठा हुआ है, वो जाना चाहिए लोगों से। और उस डर को कैसे हम हटा सकेंगे, we'll just touch basic points today.
जो बहुत सिंपली मैं टच करूंगी, नॉट इनटू अ वेरी डिटेल्ड वे, बट अ वेरी रफ आइडिया एज टू क्या है डिस्क, व्हाट इज दिस डिस्क बेसिकली, क्या काम है। तो हमारे जो वर्टिब्रेज के बीच में एक कुशन लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दो हड्डियां जो वर्टिब्रेज होते हैं, जो हमने पीछे भी देखा, जो वर्टिब्रेज हैं, इसके बीच में ये जल्ली जैसी जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज अ कुशन बेसिकली। सो ये दो बोनी स्ट्रक्चर्स के बीच में जो कुशन, इट एक्ट्स लाइक अ सॉफ्ट कुशन। इसके कारण जॉइंट्स अच्छे फ्लेक्सिबली मूव कर पाते हैं। अब धीरे धीरे विद एज, विद ऑक्यूपेशन, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हमारा लोड बॉडी कितना है, हाउ मच ओबेसिटी वी हैव, और वी ओके विद वेट कंसिडरेशन मैटर। तो उस कारण से ये जो झिल्ली है ये धीरे धीरे डिटोरेट होकर इट गोज इनटू अ वेरेंट प्रोसेस। उस कारण से व्हाट वी सी इज अ फिनोमेना कॉल्ड स्लिप डिस्क, जहां पे ये झिल्ली इट गोज एंड टचेस द edges of the bone and it touches the nerve roots of the spinal cord. That is the amount of pain which we feel जब back pain आता है when there is a slip disc or a disc herniation. ज्यादातर हम लोग ये एक्सरे में नहीं दे सकते हैं, बट एक्सरे में वी कैन सी इट लाइक अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ vertebrae column which is our spinal cord, but doctors advise an MRI. But I usually say that wait for MRI. Even if you get a back pain, please wait. Don't have to unnecessary go and get an MRI tested, because maximum of the back pains can be healed without going too aggressive with it. Because एक ही बैक पेन का मंत्र है, heal it early without bed rest, without too much of medication, and do not become stiffen enough to just bed rest. उससे मसल की जो कैपेसिटी है वो वीक हो जाती है, एंड उस कारण से बैक पेन और बढ़ने लगता है, एंड दैट इज अ क्रॉनिक बैक पेन के लेवल पे आ जाता है। सो नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम ठीक से बैठते नहीं है ना। 24 घंटे अगर हम स्लाउच होके बैठ रहे हैं, whenever and in whatever way, like when we are driving a car, when we are sitting and working, या हम खड़े होकर भी जब काम कर रहे हैं और किचन में खड़े खड़े झुक झुक के काम कर रहे हैं, तो हमारी जो डिस्क है ये सिकुड़ती रहती है। As a result of that, that झिल्ली is going and touching the nerve root. So सबसे बड़ा जो symptom देखते हैं is the dull ache pain in the center of the lower back or the back of the neck or the back of the entire spine, and which can proceed with weakness, numbness and tingling in the muscles. So बहुत ज्यादा हमारे body में pins and needles और tingling sensation feel होने लगता है, and that is what we call as the slip disorder, or one of the most painful spine conditions. तो जनरली लोगों के अंदर एक अलार्म आ जाता है कि मेरा डिस्क स्लिप हो गया। जैसे एक वर्ड लोग सुनते हैं MRI के थ्रू या डॉक्टर्स के थ्रू, they get into a panic mode, and that is what I want to burst some myths, that आपके जो डिस्क हैं वो स्लिप नहीं होते हैं, और आप lot of lifestyle changes and lot of modification through physiotherapy management, which I'll be telling, you can modify your condition and you can manage your back pain right sitting at home without undergoing any surgery, without depending on too much of medications also. Now, lumbago is also a term which we refer to a lower back pain, which might intensify if not treated properly. So generally हम बोलते हैं बैक पेन हो गया है, एक गरम सेक कर लो या ठंडा सेक कर लो, सो जाओ। But आज के जमाने में we talk about lot of things in terms of little bit of exercise which you can do right at that moment when you get a back pain, immediately to solve that pain. Now, hence, it is very important to correctly recognize the back pain. So, कारण क्या है बैक पेन का, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, और उसको हम effectively तभी ट्रीट कर पाते हैं। By the way of timely treatment, back can be cured permanently, and at least it can be reduced without the need for unnecessary surgery. तो क्या होता है, when you are feeling any dull amount of pains, that is the time you need to be addressing your postures, or you have to address your sleeping style. आपके जो काम कर रहे हैं उस दिन में क्या क्या काम कर रहे हैं, आपकी हॉबीज क्या है, उस हॉबीज के कारण आपका बैक कैसे अफेक्ट हो रहा है, all that will be affecting your intensity of the back pain. Now, what are the causes of the disc herniation? Why does
Some people get it, some people don't get it. I have patients as young as 19 and 18 years old जिनको डिस्क herniation की सर्जरी हो गई है. So उनकी जब चौथी सर्जरी होने वाली थी तब जाके वो बच्ची मेरे पास आके उसके फादर ने रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर जी आप एक बार देखिए, because I don't want any more surgery for her. So the major cause of disc herniation is the gradual aging wear and tear process. But a 19-year-old like young girl का क्यों disc herniation हो रहा है? Mainly the posture, mainly because everybody is very sedentary and everybody is not looking after their postures. So as people age, the disc becomes less flexible and it becomes very stiffened, and the stiff object can just be prone to tearing and rupturing, और थोड़े से minor twist or strain में वो झिल्ली बाहर आ सकती है and can touch the nerve roots. So most people can't pinpoint what is the cause of their herniated disc. Sometimes it is your very tight back muscles or weak back muscles. Sometimes it can be because of your thigh muscles, which are very, very tight. Sometimes your hamstrings are very tight. जो हमारी back of the muscles thigh के हैं, if they are very tight, that can cause you increased chances of back pain, increased chances of slip disc, and any twisting, turning done in that manner when the thigh muscles are very tight can lead into slip disc. Now, आधे से ज़्यादा लोग come to me after doing a yogic asana, like बहुत rapid सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं जब you're standing against gravity, then you go towards gravity, your hamstrings are not relaxed and you have not done warm-ups. That is the time majority of the people can get a slip disc, because आप बहुत ज़्यादा gravitational forces को you are kind of fighting it out with your body poses, with Surya Namaskars, and then you're not warming up your body, especially for hamstrings, and then it just twitches off the herniated disc comes and touches the nerve root. So very rarely we see that there has been a traumatic event or a fall which is called a disc prolapse. Basically, लोग गिर के या चोट लगने से disc prolapse नहीं होते हैं. Over the time being, जो हमारी activity रही है, जो हम काम करते हैं, हमारी habits जो है, हमारे emotions कैसे हैं, all that affects our spinal muscles and also our disc. तो risk factors क्या है? What are the major risk factors जो हम देखते हैं? Basically, overweight होना, extra weight जितना body में रहेगा and extra abdomen जितना रहेगा, or a belly fat, will have more pressure on the disc at the lower back. Occupational hazards में काफी दिखता है. So, lot of school teachers have this risk. Lot of IT professionals, because they keep sitting all day long, hardly any movements in their bodies. Lot of people who work in factory setting जहाँ पे बहुत भारी सामान उठाना है, रखना है, उनको ये problem आती है, and they are more prone for disc herniation. Many of the pregnant women, because जब वो pregnant होती हैं, the extra belly load which they have because of the baby, they are also prone for herniated disc. So genetics also plays a very important role, and especially if your father has a very weak spine or a mother has a weak spine, we see that the children are prone for it too. Smoking is the biggest culprit for getting your disc getting degenerated, because smoking is sucking off all your body's nutrition, and a good amount of vitamin D is getting also sucked out because of smoking. Calcium gets depleted, iron gets depleted. So that's why smoking is supposed to be totally stopped for people who have back pain. Frequent driving, जो long driving करते हैं, those are going on the highway, people are driving for 6-7 hours, or everyday commute in your city life, basically lot of traffic jams, you're continuously braking and clutching and braking and clutching. उस action के कारण there's a lot of spasm which builds up in your lower half of your hips, which also leads into tight hamstrings, causing pain and also increasing the chances of herniation. Being sedentary, as I've always told, sitting is the next to smoking. जितना आप बैठेंगे उतना आप अपनी body को और अपने spine को deteriorate करेंगे. So what I say is movement is the new medicine, and movement is lotion. It's like lotion for your joints. जितना move करेंगे आप उतना flexibility add करेंगे अपने disc में, अपने vertebrae में, and that adds up to a lot of cushioning in all your joints basically.
Now, what are the preventive tips? So exercising is the top word. Exercise can never be, sidetracked versus any other medications you take. It is helpful to support your spinal structures, your muscles, maintaining a good posture. So आधे से ज़्यादा लोग जो phone पे रहते हैं, जो laptop पे रहते हैं, they are having a very compromised posture because उनका posture में shoulders बहुत आगे आ गए हैं, बहुत stooped हो गए हैं, neck is very forward, उस कारण से spine में एक curve, unnatural curve बनते जा रहा है जो we are not born with, we are not naturally born with that curve. And as a result, jab hum everyone, especially when you are aging beyond 15, 16 to 17, jab children are in school and teens and they start to, put on a lot of weight, that is the time we should be very aware that parents should look into not letting their child sit for long and become obese. And the mantra is to quit smoking and also stop having a lot of use of alcohol, because that also causes a lot of issues with wear and tear of the spine. What are the complications associated with slip disc? Like just above the waist, the spinal cord ends. And उससे क्या होता है, जो spinal canal के अंदर से जो nerve roots आती हैं, it forms a horse tail. जैसे horse की tail होती है, उस जैसे called as cauda equina. Now, really, very rarely, this disc herniation can compress the spinal cord. उस कारण we get this cauda equina kind of symptoms. उसमें क्या होता है, we get total numbness and pain in both the legs. Activities हमारी reduce हो जाएंगी. There is a total loss of bladder and bowel. तो लोगों का क्या होता है, they can't control their urine, they can't control their bowels, they have leakage. Sometimes it's not, they are having kind of constipation. All that symptoms are a symptom of cauda equina, जहाँ पे आपकी spinal cord इतनी compress हो गई है because of whatever factors, and a saddle anesthesia. They touch that area, the inner thighs, the back of the legs, and the area around the rectum that is totally numb. And that is a cause of worry. And that is the time when we need surgical interventions, or we need a surgeon to take a look in this kind of situations for a patient. So many of these patients will not reach such a situation if they are not done anything majorly, not involved in a road traffic accident, और काफी समय से उनको कोई ऐसा कोई tumor like structures नहीं रहे हैं, if there has not been any debilitating diseases which has affected the nerve roots. तो आधे से ज्यादा these complications will come only at a later stage when you've ignored the first 2-3 cycles of your pain, herniation, and the disc prolapse for yourself. So another condition जहाँ पे back pain काफी तरह देखा जाता है जब people are actually going down the staircase. So जब वो ऐसे bend कर रहे हैं, they are fine. But when they're climbing the steps, that's the pain increases. That's the sign of a spinal stenosis. जहाँ पे हम देखते हैं कि spinal disc हर तरफ से it's kind of squeezing the disc basically, and that causes a lot of compression of the nerve roots. So आधे से ज़्यादा spinal stenosis cases are because of very, very faulty postures of your disc or very faulty postures of your vertebrae. इनको अगर हम ठीक से control करें तो lot of things around stenosis can be controlled, and maximum old age the 60, 65, 70 तक a lot of people will show symptoms of stenosis, but we can control it by a lot of therapeutic means, which is all holistic, which you can always do at home. Now the rule of thumb is the slip disc का सबसे बड़ा जो back pain होता है, don't treat it in a way where you got to panic. Don't over medicate yourself. Don't go into total bed rest. Pain is a good sign. All pain is not bad. Pain is a signal, sure, and as a result of that, the body tries to modify certain movements of the body. अगर हम painkillers immediate back pain होने पे अगर हम तुरंत muscle relaxant दे देंगे तो your pain muscles जो muscles के root cause है वो चला जाता है, and as a result of that you start doing the faulty movements whereby you'll cause more problem for your disc basically and more problem for the spine. So pain is as bad as you think.
bad is the cause of pain, not the pain. So don't kill the pain, remove the cause. So my word of advice is simple. Remove the root cause of the pain, just not the pain. Muscle relaxant laker, endless amount of painkillers laker, we can subdue the pain, but the root cause of the pain could be because my posture is faulty. I've not corrected it. So pain can resurface with more higher intensity because we have not solved the root cause. In mainly cases of men, this is a very good advice I want to give to जितने लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके वॉलेट है क्या आपके बैक पॉकेट में? हाउ मेनी पीपल कीप अ बैक वॉलेट रखते हैं बैक पॉकेट में? अगर आप वॉलेट अगर अपने बैक पॉकेट में रख रहे हैं तो आपका पॉस्चर बहुत uneven हो जाता है. So one butt is up, one butt is almost touching the sofa. As a result of that, many men complain of this wallet syndrome, which is not slip disc. आधे से ज्यादा की surgery, unnecessary surgery हो जाती है because people have not been able to understand that the pain was actually coming from the butt because of the compressed muscle in the butt rather than from the slip disc. So 90% of the slip disc की जो surgeries है हम लोग रोक सकते हैं अगर हम ये चीज को ठीक कर लें. We stop putting a wallet at the back pocket. And majority of the cases में clinicians को भी ये question अपने पेशेंट से पूछना चाहिए आपका पेन कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, बैठने में ज्यादा आ रहा है, झुकने में ज्यादा आ रहा है, लेटने में ज्यादा आ रहा है, चलने में ज्यादा आ रहा है. These are classical signals which will give us a right approach for our patients with back pain. अगर इन पेशेंट्स को जहाँ पे वॉलेट के कारण बैक पेन आ रहा है तो there's a pain which is there in the muscles of the hip area. उन मसल्स को ट्रीट करके our pain can be managed and we don't have to touch the spine at all in this case. Now, different levels of red zones जो हम देख रहे हैं body parts में, this is the area where जो slip disc pain can get referred. It can get referred to your buttocks, to the sides of the thigh, to the lower part of your calf. It can also just remain at the upper part of your thigh and a buttock. Depends on the nerve root which has been compressed. So depending on the kind of nerve roots or pain जहाँ पर है, उस according our therapies are streamlined. As of now, about like 80% of my cases, I've been able to manage through online medium also. Why so? Because if we correct the posture of our patients, the nerve root compression जो nerve में herniated disc के कारण आ रहा है, we can correct it. We can correct the faulty structure of the spine also. So a lot of things which we do is functional capacity of the patient, structural integrity of the spine. We do a little bit of relaxation of the muscles, which could be in the form of IFT, TENS, and if there's very acute pain. But majority of the pain can be managed by controlling what caused the pain. So we know exactly आप जल्दी से उठ रहे थे उसमें बैक में कैच आ गया या आप चलते चलते आपने कोई भारी सामान उठा लिया. तो basis of the history, we look at the patient and accordingly we can solve a lot of pain. And a lot of pain can be managed just on the basis of structural exercises and correction of the alignment of the body spines. Now, majority of the time हम जैसे खड़े हो रहे हैं तो इस फिगर में हम देख रहे हैं एक साइड का हिप थोड़ा नीचे है और एक साइड का हिप थोड़ा आपकी आवाज बंद हो गई डॉक्टर अंजलि. We can't hear you. Posture, we'll see that one side of the hip has gone a little up and one side of the hip has gone a little down. हम जैसे अपने फुट पे खड़े हो रहे हैं, one side of our leg is having pronation जहाँ पे बिल्कुल flat foot है और one side हमारा बहुत high arch है, that can upset the rhythm of the spine. तो actually में हम जब disc prolapse सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि disc को treat कर रहे हैं, but से ज्यादा लोग जितने मेरे पेशेंट हैं एक डिस्क सर्जरी के बाद दूसरी तीसरी चौथी करनी पड़ जाती है because if we don't solve the root of the problem. The root of the problem is how you stand,
how your postures are. अगर इस सब को ठीक किया जाए, and that is what I use in my structural therapies, which I do online, and that is a lot of patients get treated while they stay at home. They don't have to even visit the clinic also. So this is a very important figure. कई बार patients are complaining that they have pain in the neck and they also have a pain in the jaw. They have pain in the tailbone and they have pain in the butt. तो common physiotherapy centers में क्या होगा? They put IFT, ultrasound, traction and everything, but no results are coming. Why so? We don't look at the structural integrity and the symmetry of the body. So यहाँ पर हमको skeletal structure में दिख रहा है, एक shoulder is high, एक shoulder is low, one side of the leg is gone into pronation. Pronation मतलब पूरी arch चली गई या flattened out surface हो गया है. उस कारण से our knee goes into total rotation. That causes the hip on one side to go literally low. So there's imbalances in the muscle groups on either side of the body. Now, as a result of that, what we see is this whole structure can actually control how your core is working. So हमारा core हमारे back को help करता है and हमारा jaw कैसे open और बंद हो रहा है. Lot of people complain of temporomandibular jaw pain जहाँ पे बहुत headache आ रहा है. So लोगों को लग रहा है the pain is coming from the neck and going to the head. But actually the pain is coming from the jaw, radiating to the head because of the wrong standing posture, because of the skeletal system which has gone crooked. Now, अगर हम इस चीज को ठीक करेंगे तो spinal discal pressure will minimize by 95% on its own. आधे से ज्यादा patients हम देखते हैं जिनके knee are valgus. Valgus मतलब knees are knock knee. जिनके knock knees होंगे, they'll have very tight butt muscles. And as a result of that, they will always be having a butt which is little protruded or a lumbar lordosis. उस कारण से they'll have a lot of back pain, which will compromise the spine. So अगर हम knee joints को ठीक करेंगे, we automatically will correct the spine. So sometimes हम बोलते हैं कि pain back में है, but मैं आपके back को नहीं treat करूंगी, मैं आपके hip को ठीक करूंगी, मैं आपके foot को ठीक करूंगी. By treating that, my discal pressures can come down. So this is a new approach medicine which we use, especially in controlling back pains nowadays. This is a very important chapter because everybody is lifting anything and everything heavy. उनको हमेशा bend from your hips rather than bending from the spine. तो spine को कभी आप curl नहीं करिए, आप हमेशा hips से bend होकर सामान को उठाइए. इससे आपका spinal जो disc है उसका wear and tear कम हो जाएगा and it will not get injured. Half the time क्या होता है, हम गलती से कुछ भी सामान आगे झुक के उठा लेते हैं and that is what ऐसी habit हम करते we got lead into a phenomena which causes disc herniation. So if we learn this lifting techniques well and use it every day, I think maximum of the disc prolapse could be controlled without doing anything major. Now, what is this? This is the upper cross syndrome. हम आधे से ज्यादा patients में देखते हैं कि उनकी body का जो neck है बहुत forward आ गया है and shoulders are all rounded up. तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है जो spine है, this is called kyphotic spine. Kyphosis मतलब हमारा spine एकदम question mark के जैसा बन गया है. Now question mark के जैसा बनने के कारण हमारी जो neck है बहुत और head है वो बहुत forward आ गया है. Now as a result of that, my front muscles or pectoral muscles, जो हमारी chest muscles हैं वो बहुत tight हो जाती हैं और हमारी जो पीछे की muscles हैं जो which supports our neck becomes very weak and rounded. And ये बहुत elongate हो जाती है. Muscle which is very elongated or very longer becomes weaker, and the muscle which is shorter becomes tighter and has to be elongated to open up the chest so that we can breathe well and we can correct the posture. So amount of load our spine has when our spine is straight is about 12 lb, and अगर हमारा पूरा neck आगे आ गया is 42 lb. This is the main reason why our back is having so much of issue in the present scenario, because everybody is continuously typing on the phone, SMSs, and continuously typing on the laptop. So posture is a very important thing. अगर आप type कर रहे हो तो hold your phone to the level of your eyelid. Never hold it down. Never put it down and type. जितना आप नीचे करके टाइप करेंगे, you are typing to 100 people in a day, your neck is all going down over the time being. So
Just rule of thumb is get your phone to your eyelid, minimize the use of gadgets as much as possible, spend your time with nature and move and exercise. That's the rule of thumb. So this herniation to prevent clinically, these are the basic exercises. And it has to be done under the supervision of a physiotherapist if you have a very bad disc prolapse, especially if you feel that your body is uneven, one side of your shoulder is high, one side of the shoulder is low. I do a lot of this online therapy where I see patients are doing these exercises, they're not getting results. Because this is a standard format of exercises given in all hospital. Disc prolapse hai to aap ye exercise karo. These are good to help you to stay healthy with the spine which is strong. But agar आपका बहुत complicated disc phenomena hai and the pain is not coming down with this exercise, so we really need to work on postures and structures and alignments and then go into strengthening. So jab tak alignment of the bone theek nahi hai, never go and do strengthening exercise. First align the bones, first align and balance your muscle groups, and then only go for strengthening of the back muscles. So as I said, sitting is the new smoking. The way you can reduce the chances of back pain is to reduce the amount of time you spend on your chairs and sofa, and get active, move about a bit, and get physically literate also. So the common areas of pain जब हम disc prolapse होता है तो लोगों को neck, shoulder में referred pain और arms और fingers में pain radiate होते दिखता है. बहुतों को back से lower feet तक दिखता है ये pain जो natural phenomena और disc का होता है. कई बार ये pain इसलिए भी आ रहा होता है because हमारा spine straight ना होके it becomes crooked and it's called scoliosis, which is very common in the growing up children, which is between 12 to 18-year age group. And इस एज ग्रुप में अगर हम इस पेन को और स्पाइन को ठीक कर देंगे तो lot of benefits will come, because the earlier we treat the spine which is getting faulty or crooked, the results are good without any surgical interventions. So this is what I was talking about. This is a basic culprit. Our spines are getting affected. हमारा जो spine है बहुत rounded होता जा रहा है, and that increases the discal pressure on the entire vertebral column, and the vertebral load which is increased because of this will hamper the lower back vertebrae also. So जो चीज ऊपर के vertebrae में हो रही है वो lower vertebrae में भी transmit हो रही है. We have one spine and it affects like totally. So I've always talked about in my posture class also about the horror stories. So कई लोग अपने बैठने का ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं. They are sitting as and when, बहुत high chair है, बहुत low chair है. They are leaning into the screen. They are falling behind the screen. And as a result of this, अगर आपकी यही रोज की habit रहेगी तो spine भी बेचारा affect होते जाता है. So I always say is आपका spine एक कच्चे घड़े के जैसा है. जैसे अपनी कच्चा clay pot होता है, जो आप डिजाइन अपने स्पाइन को देना चाहते हो उस क्ले पॉट के जैसे दे सकते हैं. तो आप बचपन से जो आप स्पाइन की डिजाइन करेंगे, जैसा पोस्चर देंगे, वैसे ही स्पाइन आप पाएंगे फ्यूचर में. सो जो लोग बैठ रहे हैं काफी टाइम के लिए, द रूल ऑफ थंब इज your eye to the screen angle should be about 10 to 15 degree angle, your shoulder and neck 0 to 10 degree, and everything should be neutral about 90 degree. Your hip to your knee angle should be about 90 degree. ये 90-90 rule of thumb है, and if you can maintain this posture is very excellent if you want to work for long hours. But get up as often as possible so that you can diffuse the monotony which builds up in the spine, and the spine gets some lotion and movement and lubrication as a result of movement, and also gravity helps to straighten you. So always remember, जितना आप खड़े होंगे बल्कि कोई gravity work करेगी आपकी muscles और joints में, that is a big boon. It's a very big blessing. So, and again, we evolved from the Homo sapien. We were monkeys. We were always climbing trees, and we were having a stoop posture. We grew up to invent and grow our crops, went into building buildings. We became straight.
and then we are back to sitting and old age man का हो रहा है. We have seen that the person का जो disc structure है, जो jaw structure है, वो भी change हो गया है. Because the kind of food we are eating, the kind of lifestyle we are leading, everything has changed as per the bony phenomena of our bodies. So is karan se we have to be more cautious about what we do and how we take care of our spines. So the rule of thumb is अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना बहुत जरूरी है. जैसे कि आपका हेल्थ वेलनेस पे ध्यान उतना ही रखना है जितना आप अपने कैरियर और पे रखते हैं, जितना आप अर्निंग मनी पे रखते हैं. So you have to have a very a grassroots level approach where आप हर चीज के लिए टाइम निकाल पाए, कैरियर के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, leisure activities, financial goals, lifelong learning, relationships and spiritual well-being and environmental care. ये सारे चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे तो lot of issues of our which come because of our lifestyle can be controlled. So stop the couch potato lifestyle. जितना आप healthy खाएंगे, spine उतना healthy रहेगा. So a lot of vitamins like vitamin D, B12, iron is very important. Stop sitting, coming back from work where you are sitting, then you come back, sit on a couch, and then you start watching television or Netflix. Again, that's again a lifestyle which is not very good for the spine. Spine हमेशा bent posture में रह रहा है. So remember the key word is to stretch as often as possible. इस कारण से हमारे body में बहुत fluidity आती है and lot of blood circulation which helps to keep us disc in a very healthy position. And walk every day for 30 minutes. जितना आप walk करेंगे, it helps to lubricate each aspect of our vertebral column and aspects of the joints, and it helps to control your basic lifestyle diseases also. Take the stairs as much as possible. जितना आप active रहेंगे, जितना आप up and down the stairs करेंगे, that is a very good way to keep your core muscles strong and to keep your back muscles and the hip muscles strong. Taking the stairs is a very good exercise. And jog and run if you can, if you don't have an issue of herniated disc and back pain. Only after consultation with the physiotherapist, you should be able to do it in very good, comfortable manner. So I'm open for questions now. Thank you. So my details are there. Agar kisi ko bhi, like everybody wants to consult in the later half. Hello. Yeah. May I request you, is it a recorded one so that who cannot make it, I can send them these to, and they will take the benefit of this. This will be live on, you can see it on Facebook, you can see it on YouTube, this will be there. Okay. Any specific time or it would be available? It is always there, you can just Thank go you. and Thank you. Thank Keshav ji has a question. समझ गया. Thank you. Keshav ji, please. Yes, unmute करके question please. प्रश्न पूछिए. जी केशव जी पूछिए. आपकी आवाज नहीं आ रही केशव जी. हेलो जी यस. नमस्ते डॉक्टर अंजलि. नमस्ते. मैं एल्डर ही 75, उसके लिए कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ. जे उनका ऑक्यूपेशन डिमांड्स prolonged sitting and he has developed saddle anesthesia, and MRI shows L4 and L5 disc slightly bulged. It is not totally herniated. One doctor surgeon, I have checked up with two doctors. One surgeon is telling iska surgery, decompression surgery is required. Another is doctor is telling nothing required, only physical exercise and some vitamins will be maybe applied. So I am in a fix. Can you suggest, give your view about this? Yeah, केशव जी, generally मैं आपको देख के भी बोल सकती हूँ, because postures and देखकर हम telehealth के medium में we can always tell you आपको किस level की treatment चाहिए, because we don't tell everybody that the surgery is the only option. So you can connect
with me one-to-one, and you have my phone numbers on this webinar also. इसके जो webinar मैंने दिया उसमें मेरे phone numbers हैं, आप connect कर पाएंगे मेरे से, and on that basis I can suggest you whether you really need, and we can help you, you know, solve the issue online also, not a problem. Okay, thank you. So हाँ, thank you. रविंदर जी बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रविंदर आईफोन, मिस्टर रविंदर, यस, पूछिए अपना प्रश्न, वीडियो भी ऑन कीजिए क्रॉस को। डॉक्टर अंजलि नमस्कार, मेरा नाम रविंदर ढींगरा है। हाँ जी। मेरी नेक पर अगर आप ये देख पा रही हो, काफी मोटा सा ये एक मांस का लोथड़ा सा बना हुआ है, और ये लगभग पिछले 22 साल से है, जितना मुझे याद है अराउंड 2000 के आसपास ये बना था। इसका कुछ, आई बिलीव आई एम ए सीरियस पेशेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसका कुछ इलाज है क्या डॉक्टर? जी हाँ रविंदर जी, इसका इलाज है, अगर मैंने जैसे बोला है KHFT को भी मेरे डिटेल्स हैं, आप लोग 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू ऑल ऑनलाइन। ओके, सो आपकी जो सर्वाइकल जो एक कर्व है वो चला गया है। ओके, ये पूरा स्ट्रेट हो गया है आपका स्पाइन, मैं देखकर ही बोल पा रही हूँ। ओके, इट्स कॉल्ड स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, लॉस ऑफ लॉस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। Yeah, and we can correct it at your age also, we can correct it, not a problem, because आपका जो नेक है exactly जो मैंने बताया था, जहाँ पे फोन यूज ज्यादा होता है, नेक पूरी आगे आ गई है। जो आपके ईयरलोब्स है ना, वो एकदम शोल्डर के पीछे तक जाने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। So आपके जो कान के जो ईयरलोब्स हैं have to be at the level of the shoulders, and as a result of that your chin is very forward, and if we can correct this, we can do that, we can do wonders. Yeah. So definitely reach out to me online. Yeah. Thank you, doctor. Thank you. डॉक्टर अंजलि, एक प्रश्न है चैट बॉक्स में, मॉर्निंग स्टिफनेस के बारे में क्या करना चाहिए? मॉर्निंग स्टिफनेस किस एज के लोगों को हो रही है? एज नहीं लिखी है। हाउ डज वन डील विद बैक stiffness in the morning after getting up? How to keep muscles in back and buttock strong after prolonged sitting? Yeah, Dr. Sachin, thank you for joining. So the question ka jo ek answer hai, so morning when you get up after having slept for long, you have to look at your mattresses also. जो आपकी जो बेड है, जो आपका मैट्रेस है, जहाँ पे आप सो रहे हैं, प्रोलॉन्ग रात को सो रहे हैं, जहाँ पे आप बैठ रहे हैं, जो चेयर्स है, कहीं ये तो कल्प्रिट नहीं है आपके प्रोलॉन्ग स्टिफनेस इन द मॉर्निंग। तो कई बार मेरे पेशेंट्स बोलते हैं मैंने सारी एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ डॉक्टर, मेरा पेन तभी आता है जब मैं रात को सो रही हूँ या मैं बैठ के उठ रही हूँ चेयर से। तो आपकी चेयर कहीं फॉल्टी तो नहीं है, आपका बेड काफी सॉफ्ट तो नहीं है, यू विल हैव टू लुक एट बेड कितना ओल्ड है। सो आपकी जो मैट्रेस है, यू हैव टू रिप्लेस एवरी 5 years, जो हम बोलते हैं सारे पेशेंट अपसाइड डाउन एवरी 1 month। पहले जमाने में करते थे ना मैट्रेस को, काइंड ऑफ दे यूज्ड टू मेक इट वेरी स्मूथ, यू गॉट टू मेक योर मैट्रेसेस वेरी स्मूथ। उस कारण से कई बार बैक को क्या होता है, इट गेट्स वेरी टायर्ड ऑल ओवर द नाइट, और बहुत ज्यादा फटीग डेवलप हो जाता है। दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ stiffness building up when you get up in the morning. And also your piriformis muscle, which I said the butt muscles, gets very tightened when you sit for long. So we can do the stretches for those. I had shown that in the picture also of the herniated disc, like the figure of 4, and try to pull it towards your chest. And that exercise is a very good exercise to beat prolonged sitting stiffness and everything. And also you can stretch your hamstrings. So hamstring हमारे रात को सोते समय बहुत टाइट हो जाते हैं because of dehydration, because of the sleeping posture and everything. When we sit also we might be crossing our legs. So जो लोग भी सुन रहे हैं, they should never cross their legs while sitting. They should always keep their knee and toe and ankle in one straight line with the hip angle. जितना आप क्रॉस करेंगे आपका स्पाइन ट्विस्ट होता है, मसल शॉर्टन हो जाती है, एक लंबी एक छोटी हो जाती है। So this is your answer, Dr. Sachin. I think I hope I answered that. Hello, doctor. जी पूछिए।
हेलो। हाँ इंदु जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि स्ट्रेचिंग इज ए गुड एक्सरसाइज जो आपको हमें हमेशा करनी चाहिए टाइम टू टाइम. देयर इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. इज knuckling of crackling of knuckles is also good or bad? What do you suggest? Yeah, I don't suggest that you should be cracking your knuckles or anything. Okay, so कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत थक जाते हैं, right? We just do it as a matter of just to get relaxation. But मेरे आधे से ज्यादा patients के जो joints है बहुत flexible है, उनको बोलते हैं hypermobile tissues and joints. अगर वो ये करने जाएंगे तो joint dislocate हो जाते हैं. So as I'm talking in a very open forum, I will not advise everybody to crack their knuckles until unless they know how good their mobility is. Okay, so आप कर रहे हो, लेकिन don't be in a habit of doing it all the time. Okay. There is a Thank you. question from Thank you. Mr. Rainar. My wife is dealing with back pain. She's 30. We have got the acupressure done, physiotherapy done, but after all, that is not, she's not relieved for some time, but now pain has got back. She relieved for some time, or now is back. We have shown to various doctors as well, and they have given various treatments or medicine, whatever it is. So, Mr. Yeah. Rana, if you are there, you can ask your question directly. You can unmute yourself. Dr. Rana, if you are there. Otherwise, Dr. Anjali, you can respond. Okay, Mr. Hello, sir. If may I ask one question, one more question? Induji, just wait for your turn. Okay. Just wait. Let her answer the other question, which I. Okay. Mr. Raina. Mr. Raina, yeah, Mr. Raina, as I said, बैक पेन के कई कई कारण होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग सबको लिए नहीं यूज करते हैं. जैसे बॉडी प्रेजेंट होती है उस हिसाब से देखना पड़ता है. And if her pains were controlled and has again come back, 100% I have to overrule if it was like a postpartum issue which most women have. Like काफी सारी women को एक postpartum diastasis recti होती है जहाँ पे muscles of the tummy open हो जाते हैं. उस कारण से बैक मसल्स और बैक में काफी इफेक्ट आता है और पेल्विक फ्लो में काफी असर आता है. एंड दे मिमिक द सेम पेन जो स्लिप डिस्क में होता है. तो वी हैव टू रूल दैट आउट एंड यू कैन डेफिनेटली फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑनलाइन एंड वी कैन गेट अ सॉल्यूशन फॉर यू. थैंक यू. हाँ जी इंदु जी अब बोलिए. Ma'am, giving answer to one question, you told that morning stiffness may cause because of dehydration. Yeah. Here is one of my question कि अगर dehydration generally doctors कहते हैं कि during night time we should not drink water. Then what do you suggest? Should we drink water at night to avoid dehydration? क्या होता है, हम लोग जब एयर कंडीशनिंग में सोते हैं, ओके, सो आधे से ज्यादा लोगों को इंजरीज कब होती है, जब आप बहुत एयर कंडीशन रूम से जाके विदाउट वार्म अप्स करे आप खेल, मतलब यू नो लाइक यू गो एंड डू अ योगा, now you get an injury because आपकी मसल बहुत कोल्ड हो जाती है over the night and मूवमेंट हो रहा है because आप पूरी रात आप सो रहे हैं, sedentary हैं, okay, and there is air conditioning in your room, or suppose you're using a cooler, whatever you're using it just to keep your room temperature very cool, so you always have to warm up early in the morning. उठ के आपको सूर्य देव को जाके देखना है, तो get your body some natural sunlight जिससे बॉडी में natural warming up hormones आ जाएं. And you know joints में सन जरूरी है. हाइड्रेशन जो आप बोल रही है, रात को पानी पीना चाहिए ज्यादा की नहीं. It all depends on people to people. Those who don't have kidney disease, they can have water at least a glass before they sleep. That also helps to prevent you know like blood clotting and every other aspects of preventing heart attack also. So I usually say have a glass of water in the night before you sleep. People with kidney disease have to always consult their doctors and then do it. Thank you. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you. Thank you. डॉक्टर अंजलि, ऑफन देखा गया है आजकल स्पेशली समर के टाइम में, और जब ड्राई समर है, लोग सडनली बाथ लेते हैं एंड दे कम टू द एयर कंडीशन रूम, द टेम्परेचर इज वेरी कूल,
or suddenly back pain, knee pain, some pain will come. So how to avoid it? Or what exercises you should do? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कालराज, वेरी नाइस क्वेश्चन। या सो इसका मैं अक्सर समर टाइम में हम लोग ज्यादा बिजी, और एक अक्टूबर मंथ में काफी बिजी हो जाते हैं ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे मसल्स है वो भी टेम्परेचर के हिसाब से बिहेव करते हैं, के हिसाब से ऐसे होते हैं कि हम वॉशरूम से आए एंड देन वी आर इन एन एयर कंडीशन रूम, सो बॉडी हैज been had a warm shower and then we come to a cold temperature, so muscles cannot fluctuate between hot and cold so fast. मसल के अंदर टेम्परेचर स्टेबुलाई रहती है, सो अगर हम स्किन को टच करें गर्म या ठंडा, हमारी स्किन फील करती है, उसी तरह मसल्स भी फील करती है। एंड व्हेन द टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, द मसल कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है और कभी रिलैक्स करती है। इस ये जो दुविधा में मसल अटक जाती है, एंड दैट्स द टाइम व्हेन इंजरीज हैपन। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, गाड़ी में आप एसी चला रहे हैं, बहुत गर्मी धूप है बाहर, एसी को थोड़ी देर ऑफ कर दीजिए, फिर आप गर्मी धूप में बाहर निकलिए। नेवर गेट आउट ऑफ अ वेरी cold AC car out in the rains during the month of May and June maximum because of this reason. And cold air conditioning office से या मॉल से तुरंत गर्मी में बाहर आ जाते हैं। Get your body acclimatized और तब बाहर आना चाहिए। I have seen डॉक्टर अंजलि की दो तरह के ये जो पेन है ये डेवलप होते हैं समर में, जब आप पानी ठंडे पानी से नहा के या गर्म पानी जो जैसा भी पानी होता है नहा के एसी में आते हैं एयर कंडीशन रूम में, या विंटर में आप बाथरूम में गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन आप अपना एग्जॉस्ट फैन ऑन रखते हैं जो बहुत स्पीड से सक करता है दूसरी तरफ से एयर, और वो जो है गर्म पानी से नहाने के बाद आपको कहीं ना कहीं पेन पकड़ लेता है। सो बी केयरफुल। तो आप ज्यादा ना तो गर्म पानी से नहाए, ना ज्यादा वेरी ठंडे पानी से नहाए, और नॉर्मल सूक्ष्म जो बोलते हैं ना, सूक्ष्म जो टेम्परेचर होता है उस पानी में नहाकर, एंड आपकी आवाज बंद हो गई। Your fan on when you are coming out of the room. Let your body be ठंडा कर लेना, and धीरे से body acclimatize होती है। Okay, there is let's ask Ashu Dhingra wants to ask something. Ashu, good afternoon everyone. डॉक्टर अंजलि, जैसे आजकल समर्स हैं तो हम लोगों को शेक्स वगैरह लेना अच्छा लगता है, बट यूजुअली वो बोलते हैं जॉइंट पेन्स हैं तो आपको दूध ठंडा नहीं लेना चाहिए, तो व्हाट इज योर व्यू फॉर दैट? सो आशु जी, ऐसा नहीं है कि आप मतलब there's nothing related. Ayurveda definitely looks at ठंडा गर्म referring to back pains and all, but kind of atmosphere the body is into. तो एकदम फ्रिज से निकाली हुई कोई भी चीज मैं नहीं एडवाइस करती हूँ किसी पेशेंट को। आपने अगर दूध को बहुत ठंडा रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में, उसको निकाल के थोड़ी देर बाहर रख के ही आप मैंगो शेक बनाइए या कोई स्मूदी बनाइए। डोंट हैव अ वेरी चिल्ड chilled milkshake or anything, because if the body is not being able to digest it well, it again will cause a lot of inflammation in the body. So the whole goal of any pain is inflammation. और inflammation कब बढ़ता है? जब हम काफी ठंडी चीज रेफ्रिजरेटर की निकाली हुई खा रहे हैं। बॉडी का जो गट है, हमारा गट, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि आप इतनी ठंडी चीजें नहीं खाइए। अगर आपकी बॉडी टॉलरेट कर पा रही है तो आप खा सकते हैं, but as far as I said, it's best not to have it. Thank you. Last question. I'll ask one thing कि जैसे आपने postures के बारे में बताया, you have been telling that your ear, your shoulder, your elbow, your hip, and your knee down below the line, everything should be in a straight line. So should we often stand in front of the mirror or ask somebody in the family to see that yes, everything is in the straight line or where something is going wrong? So आप लोग अपना एक वीडियो बना के मेरे को भेज सकते हैं, and I can easily identify क्या हो रहा है। मतलब like
आप जैसे चल रहे हैं राइट, उसी से मैं बोल सकती हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। आजकल की जो मेडिसिन है, इट्स नॉट लाइक वेरी इंट्यूटिव, लाइक इन द सेंस वी आर वेरी इंट्यूटिव इन द सेंस आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, दैट ओनली कैन टेल अस कि हिप में पेन आ रहा है, बैक में पेन आ रहा है, नी में पेन आ रहा है। सो वी डोंट हैव टू रियली गो इनटू एग्रेसिव टेस्टिंग लाइक एक्सरे और एमआरआईज। तो आप हमेशा मिरर में देखिए कि आपके पाँव कैसे रह रहे हैं, ऐसे तो नहीं रह रहे, ऐसे तो नहीं रह रहे। तो इट्स वेरी गुड अपने आप को मिरर में इसलिए देखा भी जाता था कि आप देखें कि आपके पॉस्चर सही है कि नहीं। तो अंजलि जी प्रश्न कर सकता हूँ? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Now, sleeping posture, whether it is advisable to sleep on the right side or left side. Second is, आपके तकिए कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, so that it helps the neck muscle and the vertebra also. So, आप लोग का जो posture है, उस हिसाब से we always tell किस side सोना है. As I said, majority of the people मैं देख रही हूँ आजकल, किसी का spine right को घूम गया है, किसी का left को घूम गया है. देखने के हिसाब से we give one advice whether you should sleep right or left. But majority of the time, as per science, we say अगर आप right को सो रहे हो, तो you have increased chances of your tummy pushing up on the chest. तो आपको एसिड रिफ्लेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लेफ्ट को सो रहे हैं तो आपका जो एसिड है वो चेस्ट तक नहीं आता है, तो यू कैन हैव अ साउंड स्लीप लेफ्ट साइड। बट अगर आप दोनों साइड भी सो रहे हैं, हैव अ स्मॉल पिलो इन बिटवीन द नीज, योर नी शुड बी फोल्डेड एट 90 डिग्री, और इस सोने को हम बोलते हैं न्यूट्रल स्लीपिंग। इससे आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहता है और न्यूट्रल स्पाइन बना रहता है, नहीं तो टेढ़ा हो जाता है। और एज द मोस्ट आई कैन एडवाइज इज डोंट यूज 2-3 पिलोज। अगर जिन लोगों को स्लीप एपनिया है उन लोगों को तो 2-3 पिलोज लेना पड़ता है, बिकॉज दे कांट ब्रीथ वेल। बट जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लीप एपनिया जैसी कोई इश्यूज नहीं है, आजमा के इश्यूज नहीं है, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है, तो हैव अ वेरी थिन टर्की टॉवल। टर्की टॉवल होता है राउंड, एंड जस्ट पुट इट अंडर द नेक, और अदरवाइज जस्ट वन थिन पिलो इज इनफ फॉर यू। आई एडवाइज पीपल टू स्लीप ऑन द फ्लोर ऑल्सो, जमीन पे सोइए पुराने जमाने के जैसे। So, जिनको भी बैक पेन रह रहा है, जमीन पे सोइए। और hard beds also with a thin mattresses. Pardon, I did not get you. Hard beds with thin mattresses. That's also advisable. Hard bed, yeah. With thin mattresses. Hard bed is good. I'm told sometime back that it is always good. Hello. हाँ जी बोलिए। Advised that for cardiac patients, it's better to sleep on the left side. Is that so? You should sleep on the left. Cardiac patient should sleep on the left side. Is it advisable? As I said, your acid reflex is less when you sleep on the left. Your muscles are not pushed to the chest. Your sound is not clear, please. I couldn't understand it. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पाई, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। तो यू शुड स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड, या आपको लेफ्ट साइड ज्यादा सोना चाहिए अगर आपको कार्डियक इश्यूज हैं, स्पेशली बिकॉज द स्टमक डजंट प्रेस ऑन योर डायफ्राम, उस कारण से योर ब्रीथिंग इज बेटर। अगर आप राइट साइड को सोएंगे तो स्टमक विल कंप्रेस योर डायफ्राम, व्हिच विल अफेक्ट योर ब्रीदिंग, and that will affect the heart. So best is to sleep on the left. Okay, with this we'll conclude the session. We are already over time. Thank you. So thank you, Dr. Anjali, for your nice advice and nice words. And all those who are present, they have been told by Dr. Anjali that they can contact her. They can send their videos and get themselves checked if you are very doubtful. Grateful. So see you next week again on Wednesday, 2 o'clock, same time, same channel, and new faculty and new subject. Thank you, Anjali Agarwal, for being with us. Thank you, everyone. Thank you all. Thank you all. Bye-bye. Bye. Take care. सपना बंद कर दो। सपना